ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं बोर्ड की जो स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद ही पास कर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहला था कि कोई भी अंडरटेकिंग अगर उनको बेचना है, डिस्पोज ऑफ करना है या लीज करना है, और अंडरटेकिंग की डेफिनेशन थी नेटवर्थ में का 20% से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो या वो 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हो कंपनी की टर्नओवर में, और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग की बात थी तो उसमें था कि 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग, तो उसको हम सब्सटेंशियली द होल कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी करना है तो आपको शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन लगेगा, वो भी स्पेशल। उसके अंदर आपका ये था कि जो बायर है उसको कोई फर्क नहीं है आपने रेजोल्यूशन पास किया नहीं किया, प्रोवाइडेड उसने गुड फेथ में वो बाय किया है। और उसके बाद आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसमें बोर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि उस फंड को कैसे यूज करना है। तो ये पहला पॉइंट था। तो जब भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आए और बोले कि बोर्ड मीटिंग से कर दो, तो आप बोलो नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। बी नंबर, To invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation. अभी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज होगी, उसके बदले में इसको पैसा मिला, तो ये पैसा सिर्फ ये ट्रस्ट सिक्योरिटी था उसमें डालने के अलावा अगर कहीं पे भी आपको डालना है तो पहले शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लेके रखना है। Okay. To borrow money, where the money to be borrowed, together with the money already borrowed by the company, will exceed aggregate of its paid up share capital and free reserves, apart from temporary loans obtained from company's bankers in the ordinary course of business. ठीक है, अभी आपको पैसा लोन लेना है तो आप अपनी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व जितना लोन बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा लेना है नेटवर्थ से ज्यादा, तो फिर आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन। Provided that the acceptance by a banking company in the ordinary course of its business of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. बैंक का काम है लोगों से पैसा लेके आगे लोन देना, तो वो एग्जाम्प्ट है। Okay. Shall not be deemed to be a borrowing of monies by the banking company within the meaning of this clause. Special resolution under this clause shall specify the total amount up to which monies may be borrowed by the board of directors. जो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करेंगे तो एक्स अमाउंट तक बोर्ड बोरो कर सकता है, ऐसा लिख देंगे। Explanation: for the purposes of this clause, the expression temporary loans means loans repayable on demand or within 6 months from the date of the loan, such as short-term cash credit arrangements, the discounting of bills, and the issue of other short-term loans of a seasonal character, but does not include loans raised for the purpose of financial expenditure of a capital nature. अभी जो हमने कहा कि बोर्ड फ्री कैपिटल पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, फ्री रिजर्व से ज्यादा बोरो नहीं कर सकता, उसमें टेम्पररी लोन एक्सक्लूड किए थे। तो टेम्पररी लोन वो लोन है जो डिमांड पे पेबल है या 6 मंथ के अंदर पेबल है, लाइक शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और अदर शॉर्ट टर्म लोन्स। लेकिन अगर वो लोन जो है फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिए हुए थे, चाहे 6 महीने के अंदर के लिए लिए, तो भी वो काउंट होगा। Okay. Fair. No debt incurred by a company in excess of the limit imposed by clause C above shall be valid or effectual unless lender proves that he advanced the loan in good faith and without knowledge that the limit imposed by that clause had been exceeded. तो अभी अगर आप किसी ने आपको लोन दे दिया आपकी लिमिट से ज्यादा, तो उसको कोर्ट के थ्रू आपसे क्लेम नहीं कर सकता। कोर्ट के थ्रू मतलब वो ले नहीं सकता, वो लोन वैलिड नहीं हुआ तो कोर्ट इनवैलिड का एनफोर्समेंट नहीं देगी ना। ओके। अनलेस कोर्ट में वो ये प्रूव करे कि मैंने गुड फेथ में दिया और मुझे नहीं पता था कि ये लिमिट एक्सीड हो गई। ठीक है। Fit to remit or give time for repayment of any debt due from a director, section 180 of the Act. किसी डायरेक्टर से आपको पैसा लेना है तो आप उसको टाइम बढ़ा के अगर आपको देना है 6 महीने 1 साल में दे देना, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। Above
restrictions would not, however, be applicable to a private company since MCA has, by its notification dated 5th June 2015, exempted private companies from the provisions of Section 180 of the Act. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है अप्रूवल का जो कंसेप्ट है प्राइवेट कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल है, पब्लिक पे एप्लीकेबल है। ठीक है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी है? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बेसिकली 4 चीजें। एक मिनट सर, फोन आ रहा है, एक मिनट। सेक्शन 180 ऑफ द हेलो, क्या है वो 4 चीजें is selling, leasing or disposing of whole or substantially the whole of the undertaking. फिर investing in any other instruments other than trust securities if any amount is received as compensation due to merger or amalgamation. If any borrowing exceeding paid up share capital and free reserves, and this will not cover temporary loans obtained for period of within 6 months, which are repayable on within 6 months. An exception is except for any banking companies which in the ordinary course of business accept deposit. लिया और कैपेक्स के लिए लिया तो कवर होगा। Yes. And any director को अगर लोन दिया है और उससे पैसा वापस लेना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेटिंग द टाइम बढ़ा के दे। यस, माफ कर। ठीक है। यस। अभी तो 3 टाइप की पावर देखिए। पहली जो मीटिंग एक्सरसाइज होनी है वो 14 पावर्स है। हाँ। फिर ऐसी जिसके लिए कंसेंट लगती है वो 3 पावर्स थी। 3। फिर ऐसी जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ऐसी 4 पावर है। 4 पावर्स, राइट। चलो सोच। राइट। Power to be exercised subject to other approvals. There are several powers in the realm of day-to-day management of the company, which the board should exercise subject to approval at the general meeting, or by the central government, or by the National Company Law Tribunal, or subject to the guidance of other statutory authorities and or regulators. An illustrative list of such powers is given in Annexure 1E. अभी डी था जो स्पेशल रेजोल्यूशन, अब एक है कि जनरल स्पेशल नहीं तो जनरल रेजोल्यूशन। हेलो, अब ऐसी कौन सी पावर है जो सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन या एनसीएलटी के अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से लगती है? यहाँ पे इलस्ट्रेटिव लिस्ट है तो एग्जॉस्टिव नहीं है, तो उसके अलावा भी मैटर हो सकते हैं। पहले वाले में एग्जॉस्टिव था। Annexure 1E में जाते हैं। Power to be exercised subject to approval of the general meeting or central government or the NCLT or the requirements of other statutory authorities and or regulators. To appoint a managing director, whole-time director or manager and pay remuneration to such person in case such appointment or remuneration is at variance to the conditions specified in Schedule 5. General meeting and central government approval, subsection 4 of section 196 of the Act. क्या कह रहे हैं कि अगर Schedule 5 के हिसाब से अगर कुछ remuneration दे रहे हैं which is different, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया शेयर होल्डर को। लेकिन अगर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई और है, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। तो ऐसी ये पावर्स जो आप एक्सरसाइज करोगे वो सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और शेयर होल्डर की अप्रूवल से करोगे। एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर को अगर अपॉइंट कर रहे हैं जो वेरिएशन में। देन सर वेरिएशन मतलब दोज व्हिच आर स्पेसिफाइड इन Schedule 5 की हेलो अगर आप इससे वेरिएशन करते हो तो आपको कहिए to make contributions to bona fide charitable and other funds in excess of the limit of 5% of the average net profits for the immediately preceding 3 financial years. General meeting approval, section 181. तो up to 5% आप बिना शेयर बोर्ड अपनी आप दे सकते हैं, लेकिन 5% ज्यादा देना नेट प्रॉफिट का।
तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल, लेकिन स्पेशल नहीं है, नॉर्मल अप्रूवल। नॉर्मल, ठीक है। To give any loan or any guarantee or provide security in connection with a loan to any body, corporate or person, and acquire by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body, corporate in excess of the limits laid down for the said purposes for the board of directors. Section 186, general meeting approval by special resolution. जो 186 में पावर टू गिव लोन है, उसमें जो लिमिट्स दी हुई है कि कैपिटल पर रिजर्व की लिमिट जो है, उससे ज्यादा 60% या 100%। स्पेशल रेजोल्यूशन से लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लिख रहा है, ये ऊपर उसने कवर किया था क्या स्पेशल रेजोल्यूशन वाले में? नहीं सर, क्या आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्लियरली। अभी यहाँ पे लिख रहा है कि इस चीज के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। हाँ। और ऊपर जो लिस्ट है उसमें ये नहीं कवर था। आगे। In case of a public company, in the absence or inadequacy of profits of a company in any financial year, to pay remuneration to its managerial personnel within the limit and in excess of the limits set out in clause A and B of section 2 of part 2 of schedule 5 appended to the act, section 197. Inadequacy of profit में शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है। In case of listed companies, disposal of shares in its material subsidiary, which would reduce its shareholding either on its own or together with other subsidiaries to less than 50%, or cease the exercise of control over the subsidiary, except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by court or tribunal. Previous approval of shareholders in general meeting by way of special resolution, SEBI, listing obligations and disclosure requirements, regulation 2015. मटेरियल सब्सिडरी का 50% डिस्पोज ऑफ कर देते हो, कंट्रोल छोड़ देते हो, तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। हाँ, वो तो रेगुलेशन 24 के हिसाब से। In case of listed companies, to pay remuneration apart from sitting fee to non-executive directors, including independent directors, previous approval of shareholders in general meeting, SEBI, listing obligations and disclosure requirements, regulations 2015. अगर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कोई भी पैसा देना है तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। ठीक है। In case of listed companies, to sell, dispose and lease assets amounting to more than 20% of the assets of the material subsidiary on an aggregate basis during a financial year, unless the sale, disposal, lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a court tribunal, prior approval of shareholders by way of special resolution, and SEBI, listing obligation and disclosure requirements, regulations 2015. अगर आप मटेरियल सब्सिडी की 20% से ज्यादा एसेट भी बेचते हो तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। हाँ। इन केस ऑफ वही जो LODR में वैसे डिफाइन है ना, नेटवर्क के बेसिस पे। ठीक है। In case of listed entities, all material related party transactions shall require approval of the shareholders through ordinary resolution, and all the related parties shall abstain from voting on such resolutions. SEBI, listing obligations and disclosure requirements, regulations 2015. The above clause is not applicable in case of related party transactions entered between two government companies, a holding company and its wholly owned subsidiary, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. Similarly, in case of insurance companies and banking companies, approval of IRDA and RBI respectively is required for certain items in accordance with their extant rules. अभी फेलो सब्सिडरी भी कवर हो गया इसमें। अब इसने नीचे एग्जांपल दिया है, और ये क्या कह रहा है, मटेरियल ट्रांजैक्शन जो होती है, मटेरियल लिक्विड ट्रांजैक्शन, वो भी आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल के थ्रू ही करनी है, लेकिन एग्जम्पशन है दो गवर्नमेंट कंपनी या होल्डी ओन्ड सब्सिडरी के साथ या फेलो के साथ। फिर approval of material related party transaction. A transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty shall be considered material
if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceed 5% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity. Regulation 23(1)A of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations 2015. Members of Board of Directors and key managerial personnel shall disclose to the Board of Directors whether they, directly, indirectly, or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity. Regulation 42F of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations 2015. ठीक है, तो बड़ी ट्रांजेक्शन की शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए. अगर वो ब्रांड यूज से वो भी मटेरियल मानी जाएगी, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी है अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है. For remuneration to executive directors. In case of an equity listed company, fees or compensation payable to executive directors who are promoters or members of the promoter group shall be subject to the approval of the shareholders by special resolution in general meeting if annual remuneration payable to such executive directors exceeds rupee 5 crore or 2.5% of the net profits of the listed company, whichever is higher. Where there is more than one such director, the aggregate annual remuneration to such directors exceeds 5% of the net profits of the listed company. Provided that approval of shareholders under this provision shall be valid only till expiry of the term of such director. Regulation 17(6)E of SEBI LODR Regulations 2015. और लिस्टेड कंपनी अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5 करोड़ से ज्यादा या 2.5% से ज्यादा रेम्युनरेशन एनुअली दे रही है, या 1 से ज्यादा और 5% से ज्यादा दे रही है, तो भी स्पेशल. तो एक बार समरी में फटाफट बता दो कि ऐसी कौन सी आइटम है जहाँ पे बोर्ड की पावर सब्जेक्ट टू अदर होती है, पर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. एमडी की अपॉइंटमेंट होगी वेरिएशन में. आप बोनस चैरिटेबल ट्रस्ट में 5% से ज्यादा अगर आपको कंट्रीब्यूशन देना है, आपको अपनी लिमिट से ज्यादा लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट देनी है, पब्लिक कंपनी प्रॉफिट में रेम्युनरेशन देना है मैनेजरियल पर्सन को. अगर आपको सब्सिडी का स्टेक 50% से नीचे लाना है या कंट्रोल छोड़ना है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. अगर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस के अलावा रेम्युनरेशन देना है तो भी आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी. आप खुद ब खुद डिसीजन, ये वो सब चीजें आप खुद ब खुद नहीं ले सकता, उसको शेयर होल्डर या किसी और की अप्रूवल में लगना ही है. अपनी मटेरियल का 20% से ज्यादा भी बेचना है तो भी आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए. मटेरियल ट्रांजैक्शन करने के लिए भी प्रायर अप्रूवल चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग एग्जम्प्ट होते हैं, क्योंकि फेलो सब्सिडरी का भी लेटेस्ट चेंज आया है. अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अपॉइंट करते हो जिसको आप 5 करोड़ से ज्यादा, जो प्रमोटर का पार्ट है प्रमोटर ग्रुप का, तो 5 करोड़ से ज्यादा है 2.5 करोड़ के ऊपर आप सेल उसको, या 1 से ज्यादा है तो 5 करोड़ से ज्यादा पूरी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. ठीक है. ओके. अभी ऊपर जाते हैं. यहाँ पे एक कहाँ पे थे ऊपर? Delegation of powers. Board may, by a resolution passed at a meeting, delegate certain powers to any committee of directors, the MD, the manager, or any other principal officer of the company. Or in case of a branch office of the company, the principal office of the branch office, on such conditions as it may specify. First proviso to subsection 3 of section 1. किसको दे सकता है वो देखो, क्योंकि यहाँ पे लोग लिमिटेड है, किसी को भी नहीं दे सकते. हाँ, सिर्फ कमिटी, एमडी, मैनेजर or any principal officer. Subject to provisions of articles of the company, board may delegate any of its powers to committees with or without such restrictions and limits as may be imposed. For example,
a company may incorporate a regulation in its articles which reads as follows. The board may, subject to provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. Any committee so formed should, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the board. However, the committee cannot further delegate any of its powers to a subcommittee or to a member of the committee unless authorized to do so. पहले एक्सप्लेन करो, पढ़ते मत जाओ, पढ़ने के बाद फिर बोलो, एक्सप्लेन तो करो। मतलब जो पावर्स कमिटी को डेलीगेट हुए हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स इंपोज हो सकती है, एंड आर्टिकल्स में दे कैन इंपोज एनी सच रेगुलेशन that the board has the power to delegate additional powers to its committees, and the committee shall consist of certain number of members as the board will decide at its discretion, and all the powers which should be performed as per and confirmed as per the regulations imposed by the board itself. फिर कहता है कि कमिटी कैनॉट, मतलब अगर ये बोर्ड ने पावर्स कमिटी को डेलीगेट करी है, कमिटी सब डेलीगेशन नहीं कर सकती अनलेस बोर्ड परमिट्स सच सब डेलीगेशन. फिर in addition, powers may also be delegated by the board to one or more directors or to employees of the company or to others not in employment of the company, such as employees of the holding or subsidiary or group associated companies etc. मतलब यहाँ पे वो अलाउ कर रहे हैं आपको, हाँ इंडिविजुअल. तो कोई अगर मतलब आपसे पूछे कि मैं अपनी कंपनी में किसी और को ऑथराइज कर सकता हूँ, तो हाँ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में लिखा है आप कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो वैसा. हाँ मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हो. फिर the authority to delegate any power to a committee or any other person shall not be in contravention of any of the provisions of the Act and of the memorandum or articles of association of the company or requirements of any regulatory body. Scope of authority given may be limited by the board and conditions may also be attached there. मतलब कि जो भी आपने पावर्स डेलीगेट करी है, it should not be contravening the Companies Act या MOA या AOA या कोई भी रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, और जितनी अथॉरिटी दी है इट मस्ट स्पेसिफाई कि इस अथॉरिटी के साथ इतनी कंडीशंस अटैच्ड है. ठीक है, सो ये पावर टू डेलीगेट है. अब एक बार एक समरी में 6 सेंटेंस में क्या बोल रहा है वो समझा कि फर्स्ट ऑफ ऑल board has to pass a resolution to delegate powers to specific persons, the MD, manager, committee of creditors, or any principal officer or branch officer. Individual level also the board can delegate any powers to a particular individual who may or may not be in employment of the company. Such delegation to any committee is allowed. The committee cannot sub-delegate these powers unless board approves the same. And any powers delegated must conform with provisions of articles, the Companies Act, MOA, AOA, and it must state the scope of the powers delegated and the authority which has to be exercised in delegation. Hello? 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 एक मिनट होल्ड कर.